हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद होस्ट स्मार्ट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मैनेजर्स का MIS एंड कंट्रोल सिस्टम्स। ठीक है, जिसपे से सबसे पहले आती है हम इंट्रोडक्शन पे। MIS सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोफेशनल ट्रांजैक्शनल डाटा आप मान के चलिए जो जनरेट करता है डेली रूटीन रिपोर्ट्स को। ठीक है, तो आते हैं हम इंट्रोडक्शन पे। जो MIS है वो इन्वॉल्व हो रहा है बहुत जल्दी। MIS जो फोकस करता है प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन डाटा एंड जनरेटिंग रूटीन रिपोर्ट्स। ओवर टाइम ये बहुत डेवलप हुआ है, जिसमें से फैसिलिटेट करता है ये डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजिंग डाटा बेसिस एंड यूटिलाइजिंग वेब बेस्ड डाटा। सो MIS ऑफन यूज़ होता है इंटरचेंजेबली विथ टर्म्स लाइक information and decision system and computer based information system. It is defined as an integrated system of people and machines that support operations management and decision making within an organization. सिंपल सा इसका इंट्रोडक्शन है। अगर मैं बात करूं MIS की, इसको सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए यूज़ करा जाता है? डिसीजन मेकिंग के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन का सिस्टम प्रोसेसिंग डाटा की मैं बात करूं, इट isn't classified as MIS because it does not directly support decision making. MIS evolved the systematic and routine collection of information according to set rules. It helps managers with planning, organizing, staffing, coordinating, directing, or controlling operations. This systematic approach ensures that management can measure progress towards goals and take corrective actions when deviations occur due to environmental changes or errors. Key features of an effective MIS includes handling volumes data, complex data operations, quick search and retrieval, timely and relevant information, internet connectivity. In summary, MI is a crucial system that supports management by providing the necessary information फॉर इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेशन। आप जैसे कि देख सकते हो इस डायग्राम पे पहले प्लानिंग है, उसके बाद कंट्रोल है, उसके बाद ऑपरेशंस है। प्लानिंग एंड कंट्रोल के बीच में प्लान्स एंड टारगेट्स हैं और कंट्रोल एंड ऑपरेशन के बीच में करेक्टिव एक्शंस हैं। अब हम आते हैं सिस्टम व्यू एंड स्टेटस ऑफ MIS पे। आजकल जितने भी प्रोफेशनल हैं अक्रॉस वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग मैनेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस एंड अदर academics recognize the importance of using a system approach for problem solving and decision making. Systems are now commonly referenced in many areas such as transport, education, healthcare, defense, economics, communication, and management information system. What is system? System है क्या? System एक entity है, either conceptual or physical, composed for interdependent parts or components. These parts interact or rely on each other to function as a whole. A system involves elements connected in a causal network featuring feedback and control mechanisms to achieve specific goals or objectives. Systems are made up for subsystems which can be further divided until reaching a manageable level. Similarly, any system is part of a larger supersystem of environment in which operates. For example, subsystems further break down. The factory system is a part of a larger economic system of the country. Information system is a business. Information systems are vital in all business areas such as finance and accounting, manufacturing, sales and marketing, service industries. In summary, systems and information system are integral of efficient operation and decision making across various sectors, enhancing overall efficiency and goal achievement. जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सुपर और सुपर सिस्टम क्या है? द सिस्टम अंडर कंसिडरेशन, उसके बाद आता है अदर सिस्टम्स, उसके बाद सब सिस्टम 1, 2 एंड n। हम आते हैं फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग MIS एंड इट्स रोल एट वेरियस मैनेजमेंट लेवल्स। To design a successful management information system, it is crucial to structure information effectively, separating data relevant for decision making from the rest before dividing into MIS design.
लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन बिजनेस। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, उसके बाद मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, ऑपरेशन कंट्रोल होता है, उसके बाद आती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसमें इंटेलिजेंस आती है, डिज़ाइन आते हैं एंड चॉइस आती है। टाइप्स ऑफ डिसीजन, प्रोग्राम्ड होता है पहले, रूटीन डिसीजंस विथ प्रेजेंट प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री ऑर्डरिंग, नॉन प्रोग्राम्ड, complex decisions requiring fresh intelligence and analysis, such as launching a new product, semi programmed. Some stages follow present procedures while others require analysis, for example, variance analysis. MIS design considerations, opportunities, risk, company strategy aligns MIS with organizational goals. Company structure, designed reports according to organizational structure and decision makers. Management process, support decision making process. Technology and information sources, utilize available technology and data sources. Implementation factors, top management involvement, define purpose and goals. Skilled IT managers involved managers in identifying information needs. Qualified computer staff possesses interdisciplinary skills, balance expenditure, invest in hardware and software. Role of MIS and management levels, top level, middle level, operational level. टॉप लेवल में क्या होता है, एस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं। मिडिल लेवल में ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव्स इनटू प्लान्स एंड स्केड्यूल्स हैं। ऑपरेशनल लेवल में प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज टू मीट गोल्स हैं। कंक्लूजन, management is a process of achieving organizational goals through resource allocation and decision making. MIS plays a crucial role in strategic planning, management control, and operational control, supporting managers at all levels. In modern organizations, managers must effectively utilize information system to adapt to complex realities. ये कुछ डायग्राम्स एंड टेबल्स सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। आप एक बार इनको अच्छे से पॉज करके इसका संकेत लेकर अच्छे से पढ़ लें, सो दैट कि सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इजी हो जाए। Organizational and information system two-way relationship. A system is a structured arrangement of elements to achieve objective. An organizational, according to H.J. Levent, is a social in technical system comprising people, tasks, technology, culture and structure. As an open system, an organization adjusts to its environment by adapting its goal and structure. MIS design should consider the organization as a system, emphasizing in the human aspect and culture. Reports should cater to key decision makers, reflecting the organizational structure and power centers. For instance, in a tall hierarchy with centralization, MIS should provide control information to higher management. In functionally structured organizations, MIS should follow a functional design. Organizations with a standardized system should integrate rules, policies and procedures into MIS. क्या होता है, पहले टास्क होते हैं, या तो पहले पीपल या तो बनेगा स्ट्रक्चर। उसके बाद पीपल के बाद आते हैं टेक्नोलॉजी के बनते हैं उसके बाद टास्क के बाद कल्चर के बाद टेक्नोलॉजी। एक दूसरे के साथ सारे के सारे ये जुड़े हुए हैं। मेन इनका सबका है क्या, गोल्स हैं। चाहे वो टास्क हो रहे हैं, चाहे वो पीपल है, चाहे पहले स्ट्रक्चर बना लो, चाहे पहले कल्चर बना लो, चाहे पहले टेक्नोलॉजी बना लो, इट्स अप टू यू गाइस। MIS as decision assisting tool. Simon model breaks decision making into three phases: intelligence, design and choice. Programmed decisions are made using rules or procedures, while unstructured programs or problems require decision support system, which is DSS. Helps with non-programmed decisions by providing data flexibility and analysis tools. DSS features data management, presentation flexibility, statistical analysis, simulation, goal seeking analysis. While DSS ideally covers all decision making scenarios, in reality it's developed for specific problems. System vulnerability, abuse and auditing. Information systems are vulnerable to various threats, including hardware, software failures, user errors and data theft.
Proper controls are essential to prevent misuse and fraud. Deterrence controls such as biometrics for user identifications and access level help mitigate risks. Key control measures include user authentication, audit trails, access control, regular audit should assess objective alignment, hardware software network, staff training, safety controls, cost benefit analysis. Regular reviews, typically every 6 months to a year, ensure ongoing system performance in alignment with a organization's objective. So, in summary, in this unit provided a comprehensive understanding of MIS in organizational context. It covered the functions, importance, and relationship of MIS with planning, control, and operations. Additionally, it discussed the evaluation of MIS due to the growing need for information handling, leading to a development of computer based systems. Key points covered: understanding MIS structure and its roles within organizations, exploring MIS functions at different management levels, recognizing MIS roles in decision making process, addressing vulnerabilities and the importance of control structures, emphasizing the necessity of regular audits of information system maintenance. Thank you for watching this video. Please do like, subscribe to my channel. Thank you.